Hello students, this is Yogesh Patil and again we will learn about the next topic, that is three dimension, that is the part 2 of unit 4. In this three dimension and we will cover these particular points in this particular portion, that is introduction, 3D geometry, primitives and transformation, rotation about an arbitrary axis, parallel projection, perspective projection, viewing parameters, conversion to view plane, coordinate, the 3D viewing transformation and spatial projection. So we will cover this all points in this unit. So we discuss about the introduction of three dimension. So थ्री डायमेंशन क्या है ये पहले हम लर्न करते हैं कि कैसे थ्री डायमेंशन यहाँ पे आता है। तो वैसे हमने डायमेंशनल सिस्टम के अंदर जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बोलते हैं, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखी है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने जो देखी है, उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, एज वेल एज 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। अब 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं तो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो ही डायमेंशंस होते हैं, उन दो डायमेंशंस को हम बोलते हैं x और y। बट इन 3D डायमेंशंस उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट होता है, वो कि z कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज एडेड टू द 3D। In the 2D system we use only two coordinate, that is x and y. But in the 3D coordinate system an extra coordinate z is added. 3D graphics technique and their applications are fundamental to the entertainment, games and the computer-aided design industries. It is a continuing area of research in scientific visualization. So, we use this kind of techniques, that is three-dimensional, basically that is for the weaving. So we can use in various sector, that is for the representation of graphics. So the introductory part is that furthermore 3D graphics components are now a part of almost every personal computer, and although traditionally intended for graphics intensive software such as games, they are increasingly being used by other applications. So जो games वगैरह रहते हैं उसके थ्रू हम उसे दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। Now the next is that is the 3D geometry. Three dimension system has three axes, x, y, z. अब थ्री डायमेंशन ज्योमेट्रिक सिस्टम के अंदर जो हम डायमेंशंस यूज करते हैं उसके अंदर थ्री डायमेंशंस होते हैं, जिसको हमने थ्री एक्सिस भी बोला हुआ है, दैट इज x हो गया, y हो गया, z हो गया। अब उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है राइट हैंडेड सिस्टम और दूसरा टाइप होता है दैट इज द लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। अब जो हम बेसिकली थंब रूल जो बोलते हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का, ठीक है, उस हिसाब से उसको हमको क्या करना है, परफॉर्म करना है। इन द राइट हैंडेड सिस्टम थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट टू पॉजिटिव z डायरेक्शन से, ठीक है, नेगेटिव z डायरेक्शन से नहीं। एंड लेफ्ट हैंड सिस्टम थंब पॉइंट टू बी नेगेटिव टू डायरेक्शंस, दो अलग अलग डायरेक्शन से वो क्या करता है, उसे पॉइंट आउट करता है। फॉलोइंग फिगर शोज राइट हैंडेड ओरिएंटेशन ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पे एक क्यूब जो दिया हुआ है उसको राइट हैंडेड सिस्टम से हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यूजिंग राइट हैंडेड सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर्स a, b, c and d. So the cube that having a four corners and the namely that is a, b, c and d. अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे चार कॉर्नर्स दिए हुए, वो चार कॉर्नर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है ए बी सी डी का, उनको कुछ वैल्यूज दी है, उनका जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो किस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। तो पॉइंट ए यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे उसके तीन डायमेंशन दिख रहे हैं, एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है और जेड भी दिख रहा है। Then the point B, that is the second corner. अब ये second corner के अंदर हम अगर देखते तो वहां पे कितने नंबर ऑफ एक्सिस यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम B के तरफ जाते हैं, तो B के तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको X और Y दिख रहा है और जो Z है वो यहाँ पे हम 0 बता रहे हैं। सेम फॉर द C कोऑर्डिनेट, C के लिए अब यहाँ पे C जो हमारा पॉइंट है दैट इज द ओरिजिन, दिस वन इज ओरिजिन।
ठीक है। और जो सी पे जाते हैं, सी हमारा यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, दैट इज 0 y 0 एंड लास्ट वन दैट इज द पॉइंट डी। पॉइंट डी के लिए हमारे पास में जो डायमेंशन दिए हुए वो है 0 y एंड z। तो यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। So producing realism in 3D, the three-dimensional objects are made using computer graphics. The technique used for two-dimensional displays of three-dimensional objects is called projection. Several type of projections are available. That is, अब यहाँ पे जो टेक्निक यूज कर रही है that is for the projection के लिए, यानी हम टू डायमेंशन से थ्री डायमेंशन के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन चल रहा है वो टू डायमेंशनल के अंदर चल रहा है, बट दैट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्शन दैट विल शो थ्री डायमेंशनल सिस्टम। So in the projection there are basically three types of projections are used, that is the parallel projections, perspective projection and orthographic projections are used. In the parallel projection, in this projection, point on the screen is identified within a point in the three-dimensional objects by a line perpendicular to the display screen. The architect drawing, that is plan, front view, side view, elevation are nothing but lines of parallel projection. तो parallel projection का concept क्या है? पैरेलल प्रोजेक्शन का कंसेप्ट ये है कि हम सीधा देखते हैं, पैरेलली देखते हैं। जो ऑब्जेक्ट हम पैरेलली देखते हैं वो एज इट इज, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे उसका जो साइड है व्यू वो एज इट इज दिखेगा। अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूँ तो टॉप व्यू ही मुझे दिखेगा, ठीक है। अब जो भी पर्टिकुलर प्लान या एलिवेशन होता है वो पर्टिकुलर एलिवेशन प्लान, बट बाय मींस ऑफ लाइन बाय लाइन वो एक पैरेलली हमको विजन होता है। ऐसा नहीं कि मैं एक साइड देख रहा हूं तो मुझे दूसरी भी साइड दिखेगी, नहीं। तो पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर आपको एक पर्टिकुलर प्लान या पर्टिकुलर एलिवेशन ही दिखेगा, दैट इज इन अ पैरेलल प्रोजेक्शन। तो इन द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन थोड़ा सा अलग है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। दिस प्रोजेक्शन हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट प्रोवाइड आइडिया अबाउट डेप्थ। Further, the object from the viewer, smaller it will appear. All lines in perspective projection covering at the center point called as the center of projection. यानी मैं यहाँ से मुझे जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो स्मॉल होता है, और उसके वजह से वो क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है, फ्रॉम दैट सेंटर ऑफ पॉइंट या बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, वो पूरा का पूरा व्यू मुझे क्या होता है, डिस्प्ले होता है। तो सो दैट इज द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। And the next one is that is the orthographic projection. It is the simplest kind of projection. In this we take a top, bottom, side view of the object by extracting parallel lines from the object. अब हमें क्या करना है, जो पूरा का पूरा व्यू है वो मुझे एक्सेस करना है, तो उसके लिए जो भी पैरेलल लाइंस है वो पहले मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो भी पर्टिकुलर व्यू है पूरा का पूरा मुझे क्या होगा, डिस्प्ले होगा बाय मींस ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। So these are the basically projections that are used in the three-dimensional system. So the next is that is the primitives. अब ये primitives का concept है। Primitives basically जो भी हम geometrical transformation के अंदर जो objects use करते हैं या जो भी parameters use करते हैं वो primitives. The term geometric primitive or prime इन वेक्टर कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो यहाँ पे वेक्टर कंप्यूटर ग्राफिक्स का ये कंसेप्ट होता है। CAD system and vector geographic information system is the simplest, that is automatic or irreducible geometric shape that the system can handle, drawn, store. Sometimes the subroutines that drawn the corresponding objects are called geometric primitives as well. The most primitives are point and straight line segment, which were all the early vector graphic system. तो जो ज्योमेट्रिकल प्रिमिटिव्स है, उस ज्योमेट्रिकल प्रिमिटिव्स के अंदर आप जो वेरियस टाइप के जो शेप्स यूज करते हैं उसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पर्टिकुलर यहाँ पे कंसेप्ट हमने एलाबोरेट किया। इन कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री primitives are simple geometric shapes such as cube हो गया, cylinder हो गया, sphere हो गया, cone हो गया, pyramid हो गया, torus हो गया। The modern 2D computer graphics system may operate with primitive which are line, that is the segment or straight lines, circle and more complicated curves as well as shapes, boxes, arbitrary polygons, circles, etc.
So this is the primitives. Common set of two dimensional primitives includes lines होता है, points होता है and polygons होता है. Although some people prefer or consider triangles primitives because every polygon can be constructed from triangles. All other graphics elements are built up from these primitives. In three dimensions, triangles or polygons positions in three-dimensional space can be used as primitives to model more complex 3D form. तो बेसिकली जो पॉलीगॉन का कंसेप्ट होता है तो उसमें सबसे छोटा जो शेप होता है वो है ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का ही यूज करके हम उसे क्या करते हैं, एलाबरेट करते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं. ट्रायंगल बोलो या फिर स्क्वायर बोलो या हेक्सागन, पेंटागन, व्हाटएवर. तो बेसिकली इसे 2D के अंदर जितने सिंपल वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं उतना ही वो बेसिकली 3D के अंदर कॉम्प्लिकेटेड है. उसे उसी टाइप से कॉम्प्लिकेटेड मॉडल हमको क्या करना है, 3D फॉर्म के अंदर डिजाइन करना पड़ता है. In some cases, curves such as Bezier curves हो गया, circle हो गया, etc. May be considered primitives. In other cases, curves are complex forms created from many state primitive shapes. तो और भी कुछ शेप्स आते हैं, प्रिमिटिव्स आते हैं, जो हम कर्व्स को भी प्रिमिटिव्स के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं. अब प्रिमिटिव्स के अंदर जो बेजियर कर्व है या प्ली स्प्लिन है या व्हाटएवर जो भी पर्टिकुलर सर्कल्स वगैरह जो आते हैं वो हम कंसीडर करके उसे वहां पे क्रिएट करते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं. दैट इज फॉर द शेप. So the common primitives are the set of geometric primitives is based on the dimension of the shape being represented. Point, that is zero dimensional, a single location with no height, width or depth. पॉइंट का कंसेप्ट, अगर मैं प्रिमिटिव्स के अंदर पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, लाइन को कंसीडर कर रहा हूँ, कर्व को कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है. तो पॉइंट जो है वो जीरो डायमेंशनल होता है. जीरो डायमेंशनल होता है इसका मतलब उस पॉइंट को विड्थ भी नहीं होती है, हाइट भी नहीं होती है और डेप्थ भी नहीं होती है, बट दैट इज अ सिंगल लोकेशन. दैट इज अ सिंगल लोकेशन. Now the next common primitive is that is the line or curve. अब line बोलो या curve बोलो, that is in one dimensional, having length but no width. अब लाइन को बोलते हो तो लाइन को आपको एक पर्टिकुलर लेंथ होती है बट विड्थ नहीं होती है. Although a line linear feature may curve through a higher dimensional space. कर्व के लिए जो लाइन का पार्ट है वो स्ट्रेट होता है, बट फॉर द कर्व अगर आप लेते हो तो उसे विड्थ नहीं होती है, बट that having that occupy the maximum space in the dimensional system. Then the planar region, that is in two dimensional, having length and width also. planar के लिए length भी होती है और width भी होती है. And the next one is that is the volumetric region, that is basically in three dimensional, having length भी होती है, width भी होती है और depth भी होती है. In GIS, that is the graphics interface system, the terrain surface is often spoken of colloquially as two half dimensional because only the upper surface needs to be represented. Thus, elevation can be conceptualized as a scalar field property or functions of two-dimensional space, affording it a number of data modeling efficiency over true three-dimensional objects. A shape of any of these dimensions greater than 0 consists of an infinite number of distinct points. Because digital systems are finite, only a sample set of the point in a shape can be stored. Thus, vector data structures typically represent geometric primitive using a strategic sample organized in structures that facilitate the software interpolating the remainder of the shape at the time of analysis or display using the algorithm of computational geometry. तो कॉमन प्रॉपर्टीज के अंदर जो थ्री डायमेंशन के अंदर हम जो शेप जो भी डिफाइन करना चाहते हैं उसे नंबर से हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. अब जीरो से ज्यादा रहेगा तो जो भी पर्टिकुलर नंबर्स है वो अलग अलग पॉइंट पे रिप्रेजेंट होंगे. जो भी डिजिटल सिस्टम का यूज करते हैं हम फाइनाइट नंबर का यूज करेंगे. फाइनाइट यूज करने के बाद में, नंबर्स यूज करने के बाद में हमको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए पर्टिकुलर सर्टन एल्गोरिथम हमको वहां पे कंप्यूट करना पड़ेगा. That is the primitive system. Now the next is that is the three-dimensional transformation.
अब ये थ्री डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है, लाइक टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी हमने देखा था। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट है कि ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने बोला था कि वी आर एबल टू चेंज द साइज, द शेप, ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेम इज अगेन थ्री डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ऑब्जेक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2D में ना करते हुए हम 3D में करेंगे और उस टाइप से हम उस पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम थ्री डायमेंशनल के लिए ड्रॉ करते हैं या उसके अंदर जो भी हमको चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे अपीयर करना है, हम उसे परफॉर्म करेंगे। The geometric transformation plays a vital role in generating images of three-dimensional objects. With the help of these transformations, the location of the objects related to other can be easily expressed. Sometimes viewpoint changes rapidly, or sometimes objects move in relation to each other. For this, number of transformation can be carried out repeatedly. फर्स्ट वन इज दैट इज द ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन के 5 टाइप देखे थे। उन 5 टाइप में हमने ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, देन रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, देन शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखा है और एज वेल एज रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है। Same again, those types that will be employed in three-dimensional transformation also. It is the movement of an object from one position to another position, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करते और ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है उसमें भी मुझे ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम बेसिकली वन ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मूव करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Translation is done using translation vector. There are 3 vectors in 3D instead of 2. जो 2 डायमेंशन के अंदर हम 2 वेक्टर यूज करते हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 वेक्टर्स यूज करना है। अब ये 3 वेक्टर्स किस चीज के लिए, अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट बोलता हूँ और वो पर्टिकुलर पॉइंट की अगर वैल्यू, अगर मैं बोलता हूँ कि उसके जो डायमेंशन है x, y और z है, अगर मुझे वो ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम दैट पोजीशन टू अनदर वन पोजीशन, तो उसके लिए मुझे वो ट्रांसलेटिंग वेक्टर वहां पे क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए मैं वो जो ट्रांसलेटिंग वेक्टर रहेगा वो अलोंग विद दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट रहेगा, जैसा tx, ty एंड tz रहेगा। So on that directions, translation in the x direction is represented using tx. The translation using is y direction using ty, and the translation in the z direction is represented using tj. If P is a point having coordinate in 3-dimension directions, that is x, y, z, is translated. Then after translation, its coordinates will be x1, y1, z1. After translation, tx, ty, tz are translation vector in x, y, and z direction respectively. That is the concept. So the equation is for x1, y1 and z1. These are the translating point. So we are already existing point, that is x. So we are adding the translation vector, that is tx in the x and ty in the y and tz in the z, that is x1, y1 and z1. Three-dimensional transformations are performed by transforming each vector of the object. If an object has 5 corners, then the translation will be accomplished by translating all 5 points of new location. Following figure 1 shows the translation of point, figure 2 shows the translation of the cube. तो यहाँ पे दो अलग अलग डायग्राम दी हुई है। अगर 5 पॉइंट्स होते हैं या मोर देन 5 पॉइंट्स होते हैं तो हमको उस ऑब्जेक्ट के जो जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे वो पूरे के पूरे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब ऊपर केस में हमको क्यूब जो पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट या पॉइंट दिख रहा है वो पॉइंट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हमारा ओरिजिनल पॉइंट है x1 y x y z, इसी सेम पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे टुवर्ड द x डैश y डैश एंड z डैश पोजीशन पे। सेम इज अगेन हियर, यहाँ पे हमने क्यूब लिया हुआ है, क्यूब को हमने ट्रांसफॉर्म किया है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, that is the translation. So we are using the translation matrix. So matrix of this translation,
तो जैसा हमने वहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए सिंपल मैट्रिक्स यूज किया था, दैट इज 1 0 0 1, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन के लिए हमको और एडिशनल मैट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, उसके थ्रू हम उसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो किस टाइप से रहेगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे नोटेशन दिया हुआ है, मैट्रिक्स नोटेशन 1 0 0 0, then 0 1 0 0, then 0 0 1 0, then tx ty tz and 1। सेम मैट्रिक्स को हम इस वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 1 0 0 tx 0 1 0 ty and then 0 0 1 tz and 0 0 0 1। So the matrix representation of point translation, point के लिए अगर हमको रिप्रेजेंटेशन करना तो वो point का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से रहेगा। Point shown in the figure is x y, it become x1 y1 and z1 after translation tx ty tz are translation vector। तो हमें बेसिकली ट्रांसलेशन वेक्टर के अंदर हमारे जो एक्चुअल डायमेंशंस है उसको क्या करना है, ऐड करना है। So then we will get this translated point, that is x1 y1 z1 1, so equal to we will take the translation matrix representation, that is 1 0 0 tx and then 0 1 0 ty, then 0 0 1 tj and then 0 0 0 1, and then that is x y z and 1। So this is the matrix representation of point translation। So thank you student for watching this video. Thank you।